Hey guys, hope everyone is doing good and welcome to the Professor of Pharmacy channel. I am DM Vinayaka. So today we are going to discuss about the types of manometer topic. In earlier video, we discussed about the flow of fluids introduction, like what do you mean by fluids, what do you mean by fluid pressure, and what is the pressure difference and everything. So in today's video, we will discuss about how can we measure those pressure. Okay, let's start today's video. Firstly, let us know what do you mean by manometers. What is the definition of manometers? Okay. So manometers is a device which is used for measuring the pressure difference. मतलब मैनोमीटर एक तरीके से डिवाइस है जिसको हम यूज कर सकते हैं फॉर मेजरिंग द प्रेशर डिफरेंसेस. ओके, फॉर लाइक we want to measure a pressure, like how much of pressure is there in gases or in the liquids. So in that we can use these manometers. And SI unit of pressure is the Pascal. And मैनोमीटर्स में टाइप्स हैं, उसको हम देखेंगे अभी. So this is a chart which shows the types of manometers. Firstly, manometers दो तरीके में डिवाइड होता है. That is simple manometer and the differential manometer. In simple manometer, it is subclassified into three types. That is piezometer, U2 manometer, and the single column manometer. And this single column manometer is again subclassified into two types. That is vertical column manometer and the inclined column manometer. And this second type from the manometer, that is differential manometer. ये differential manometer दो types में divide होता है. That is one is U-tube differential manometer and the inverted U-tube differential manometer. So this is the chart of manometer, like different types of manometers which we are going to study in detail. Okay. Firstly, let us start with the simple manometer. Simple manometer is the manometer which measure the pressure at any point in a tube or vessel. In simple words, we can say any tube or vessel में at any point हम pressure को measure कर सकते हैं by using this simple manometer. A simple manometer is one that consists of a glass tube whose one end is connected to a point where pressure is measured and the other end is open to the atmospheric pressure. इसका मतलब ये है कि सिंपल मानोमीटर एक ग्लास ट्यूब को कंसिस्ट करता है जिसका वन एंड कनेक्टेड होता है एक कंपार्टमेंट में या जिसमें हमको प्रेशर मेजर करना है उस पॉइंट का कंपार्टमेंट को कनेक्ट होता है और दूसरा एंड होता है ओपन फॉर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. इसको हम डायग्राम की तरह से समझेंगे. इस सिंपल मैनोमीटर में हमने चार्ट में देखा था कि तीन टाइप्स है. दैट इज फीजोमीटर, यूट्यूब मैनोमीटर एंड द सिंगल कॉलम मैनोमीटर. जिसका पहला टाइप है फीजोमीटर. फीजोमीटर इज द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मैनोमीटर यूज्ड टू मेजर द गॉस प्रेशर. ये फीजोमीटर हम यूज कर सकते हैं टू मेजर द गॉस प्रेशर. ओके, सो दिस इज द डायग्राम ऑफ द पीजोमीटर. इसमें हम सिंपल मैनोमीटर में मैंने कहा था डेफिनेशन में कि एक ग्लास ट्यूब है. सो दिस इज द ग्लास ट्यूब वह जिसका वन हैंड कनेक्टेड है एक कंपार्टमेंट में जिसका प्रेशर हमको मेजर करना है. एक पॉइंट है, इस पॉइंट का प्रेशर हमको मेजर करना है. एक ग्लास ट्यूब है जिसका अनदर एंड ओपन है फॉर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ओके, दिस इज द पॉइंट. तो अभी क्या होगा, अज्यूम कर लो इधर एक कंपार्टमेंट है जिसमें लिक्विड भरा है. ओके, और एक क्लोज है विथ द नॉब. तो सिर्फ लिक्विड इस कंपार्टमेंट में है. अभी पूरा ट्यूब में नहीं भरा है, सिर्फ इस कंपार्टमेंट में है. जब हम इस नॉब को ओपन करेंगे तो क्या होगा, जो ये लिक्विड है वो फ्लो होना स्टार्ट करेगा. फ्लो होना से क्या होगा, ये लिक्विड राइज करेगा क्योंकि प्रेशर है, प्रेशर अप्लाई हो रहा है तो लिक्विड राइज होगा. ओके, पहले क्या था, पहले लिक्विड सिर्फ इस कंपार्टमेंट में था, फिर हमने नॉब खोल दिया तो वो प्रेशर बाहर आ रहा है, तो वो फ्लो हो रहा है द लिक्विड. तो इस पॉइंट का प्रेशर हमको फाइंड आउट करना है. तो पहले जितना हाइट था और जितना अभी राइज हुआ है इसको हम लेते हैं एज हाइट h. दिस पॉइंट को हम लेते हैं एज a. तो इधर तीन मेन प्रॉपर्टीज अप्लाई हो रहा है. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ प्रेशर,
हम पिछले क्लास में सीखे थे कि प्रेशर का फॉर्मूला है, दैट इज P is equals to rho into G into H. The P is nothing but the pressure is equals to density into gravity into height. Okay. So this is the piezometer. This is the formula of the pressure, that is P is equals to rho into G into H. Rho is nothing but the density and G is nothing but the gravity and H is the height. So this is the formula of the piezometer or the pressure. Piezometer का कुछ limitations है. That is, the piezometer is not used to measure the gas pressure. हम piezometer यूज करके गैस का प्रेशर मेजर नहीं कर सकते. दूसरा लिमिटेशन है, दैट इज नॉट यूज्ड इन हाई प्रेशर. मीन्स हम हाई प्रेशर मेजर करने के लिए piezometer को हम यूज नहीं कर सकते. सो दीज आर द टू limitations of the piezometer. Next is the U-tube manometer. U-tube manometer is the manometer which is developed in order to mask the limitations of the piezometer. Okay, so this U-tube manometer can be used to measure the both liquid and gas pressures. Okay, so U-tube manometer is nothing but a manometer that consists of a glass tube that is bent in a U-shaped glass tube, where one end of the tube is connected to a point where the pressure is to be measured and the other end remains open to the atmospheric pressure. इसका भी कंस्ट्रक्शन सेम है. एक ग्लास ट्यूब होगा, वो ग्लास ट्यूब यू शेप में होगा. ओके, जिसका वन पार्ट कनेक्ट होगा टू द कंपार्टमेंट एंड द अदर पार्ट ओपन होगा फॉर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ओके, इसको हम डायग्राम देख के समझेंगे इन डिटेल. तो ये डायग्राम है यू शेप्ड मैनोमीटर का. तो दिस इज अ ट्यू शेप्ड ट्यूब जिसमें दो तरह का लिक्विड्स है. दिस इज द हायर डेंसिटी लिक्विड and in the compartment is the lower density liquid, and this is the knob जिसका वन ग्लास ट्यूब का वन पार्ट कनेक्ट होगा लोअर डेंसिटी कंपार्टमेंट को और दूसरा होगा ओपन फॉर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ओके, तो दिस इज द बिफोर वी ओपन द नॉब डायग्राम. तो हम इस नॉब को ओपन करने के बाद क्या होगा, एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम, नॉब ओपन किया तो ये लिक्विड जो इस कंपार्टमेंट में था वो फ्लो होना स्टार्ट हो गया. फ्लो होने के बाद क्या करेगा, जितना भी प्रेशर इसमें कंपार्टमेंट में था वो प्रेशर अप्लाई हो रहा है और ये पुश कर रहा है द हायर डेंसिटी लिक्विड को. ओके, पुश करेगा तो क्या होगा, ये हायर डेंसिटी लिक्विड राइज होना स्टार्ट करेगा एज वी अप्लाई द प्रेशर. तो जित इतना था पहले इस लेवल पे था और अभी आप प्रेशर अप्लाई हुआ और दूसरा लिक्विड पुश हो कर रहा है तो इसका राइज हुआ लेवल इतना. ओके, तो ये लिक्विड वन है विच इज वी कैन से इट एज अ रो वन एंड दिस इज द लिक्विड टू, वी कैन से इट एज अ रो टू, क्योंकि ये दो दो अलग अलग डेंसिटी का लिक्विड्स है. ओके, तो ये कंपार्टमेंट का जो नॉब था ओपन हो गया तो क्या होगा, जो लिक्विड जितना भी अंदर था वो भी फ्लो करना स्टार्ट हो गया. तो इतना पहले इतना था इसका लेवल, अभी फ्लो होके पुश कर रहा है दूसरा लिक्विड को. तो ये जितना गैप हुआ इसको हम लेंगे एज H1, एज हाइट वन. ओके, तो ये दिस लेवल पे था द हायर डेंसिटी लिक्विड. आफ्टर वी अप्लाइड प्रेशर इट पुश द हायर डेंसिटी लिक्विड एंड देन द हायर डेंसिटी लिक्विड स्टार्ट टू rise. Okay, so this is the point up to where the higher density liquid was raised, and this is the another point which is known as the H4, and this point we known as the H3. Okay, and H3 and H4 we can neglect because this is the constant height. As you can see, this is constant height, so we will neglect these H3 and H4. तो इसका एक इक्वेशन बनेगा, that is pressure is equals to rho into G into H. Pressure is nothing but the density into gravity into height. तो ये minus rho 1 G into H1. Actually, I forgot to tell you guys. Like we are taking the negative and positive signs here in the equation. Negative nothing but the liquid which start to flow downwards, and the positive sign is nothing but the liquid which start to rise. Okay. So as you can see, when we opened the knob, what happened? The liquid started to flow. Here we will take it as a minus rho 1 G into H1.
H1 is nothing but the height of the first liquid, that is the lower density liquid, and rho 1 is the lower density liquid. Okay, so minus rho 1 into H1 minus rho 1 into G into H1 minus rho 2 into G into H3. H3 is nothing but the this point, and next is the plus rho 2 G into H4. Rho 2 is nothing but the density of the higher density liquid, that is another type of liquid, that is the rho 2 G into H4. H4 is nothing but this point, as you can see in the slide, this point. And next is the rho 2 G into H2, because from this point to this point we took it as a H2. Okay, so rho 2 G into H2. तो इसमें हम रो टू जी इंटू एच थ्री प्लस रो टू जी इंटू एच फोर को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, एज ए सेड अर्लियर, बिकॉज दीज टू हैव द same level, same constant level, as you can see in the slide, same level. So we will neglect those two. So next formula क्या होगा? Pressure is equals to minus rho 1 g into h1 plus rho 2 g into h2. तरीके से भी लिख सकते हैं, that is pressure is equals to rho 2 g into h2 minus rho 1 g into h1. So this is about the YouTube manometer. Next is the single column on manometer. Single column on manometer, it is a modified form of the YouTube manometer. Okay. In single column manometer, there are two types. That is vertical single column on manometer and the inclined single column on manometer. First one, let us know what is the single vertical column on manometer. Okay. In this manometer, the one limb of the manometer consists of a large container or the reservoir, and the another limb of the manometer is simple tube. इन सिंपल वर्ड्स, वर्टिकल सिंगल कॉलम मैनोमीटर का दो एंड्स है, एक ग्लास ट्यूब है, यू शेप्ड ग्लास ट्यूब है, जिसका वन एंड कनेक्ट होगा रिजर्वियर को, दूसरा एंड कनेक्ट होगा ओपन, दैट इज फॉर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. इसको हम डायग्राम से समझेंगे. एज यू कैन सी हियर, दिस इज द यू ट्यूब मैनोमीटर. दिस one end is connected to the reservoir and another end open to the atmospheric pressure. तो इस कंपार्टमेंट में एक लिक्विड है, हमने नॉब ओपन किया तो क्या होगा, ये जो लिक्विड है ये फ्लो होना स्टार्ट करेगा. ये फ्लो होने के बाद क्या करेगा, ये प्रेशर है जो अप्लाई हो रहा है इधर, तो वो पुश करेगा हायर डेंसिटी लिक्विड को, या दूसरा जो लिक्विड है यूट्यूब शेप में उसको पुश करेगा. तो पुश करने के बाद क्या होगा, लिक्विड राइज होना स्टार्ट करेगा. पहले इतना था लेवल, अभी ये अप्लाई हुआ प्रेशर और द लिक्विड इज पुशिंग द अनदर लिक्विड, एंड देन इट केम टू दिस लेवल. ये जो डिस्टेंस है, जो पहले प्रेशर अप्लाई होने से पहले जो लेवल था और अप्लाई होने के बाद जो लेवल है, ये डिफरेंस को हम लेते हैं एज डेल्टा एच. ओके, डेल्टा एच. सो दिस इज द पॉइंट वेयर वी got the H1, that is nothing but the flow of liquid from the compartment into the reservoir. From this reservoir, we took it as the H2. This is the H2 point. Sorry, this is the H2 point. This is the H3 point, and this point is the H4 point. Okay, so these two points are constant. As I said earlier, these two points are constant नहीं, मतलब सेम लेवल में है, तो हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं. तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगा, एज यू कैन सी हियर, माइनस रो वन इज नथिंग बट दिस लिक्विड, दिस इज द रो वन, दिस इज द रो टू. ओके, सो इधर क्या हो रहा है, जो लिक्विड है वो फ्लो हो रहा है, नीचे नीचे की तरफ जा रहा है. हमने क्या बोला था, जो फ्लूइड नीचे जाएगा हम उसको नेगेटिव में लिखेंगे, और जो लिक्विड राइज होगा उसको हम लिखेंगे एज अ पॉजिटिव साइन. तो इधर इक्वेशन में क्या हो रहा है, नेगेटिव क्योंकि ये नीचे आ रहा है लिक्विड, नेगेटिव क्योंकि ये रो वन का है लिक्विड है, विद डेंसिटी वन इंटू ग्रेविटेशनल फोर्स इंटू H1. H1 इज नॉट द दिस हाइट H1. और पिछले जो इक्वेशन में हुआ था सेम, माइनस रो टू, दिस इज द H3 एंड दिस इज द H4 पॉइंट. तो नेक्स्ट इक्वेशन क्या होगा, माइनस रो वन जी इंटू H3 प्लस
रो टू जी इंटू H4 प्लस रो टू जी इंटू H2। और ये मिडल में जो ये लेवल है जिसका इक्वेशन मैंने पिछले स्लाइड में दिखाया था, दैट इज -ρ1 g इंटू H3 प्लस रो2 g इंटू H4। इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो इसलिए मैंने इधर इस फार्मूले में नहीं लिखा, उसको स्किप किया है। वो दोनों नेग्लेक्ट होने के बाद क्या होगा, हमको फार्मूला मिलेगा, दैट इज प्रेशर इज इक्वल्स टू -ρ1 g इंटू H1 प्लस रो2 g इंटू H2। दिस इज द vertical single column manometer. Next one is the inclined single column manometer. In this, it has one large section which is termed as the reservoir, and another limb of the manometer is a simple tube that is inclined to a certain angle. So this is a diagram of the inclined single column manometer. इसका भी कंस्ट्रक्शन सेम है, जिसका वन एंड कनेक्ट होगा रिजर्वियर को और दूसरा एंड कनेक्ट होगा फॉर द atmospheric pressure. This is the compartment in which the liquid will be there. So after opening the compartment, what will happen? This liquid will start to flow towards the reservoir downside, and it will push the another liquid, that is the row 2 liquid, and this is the row 1 liquid. So it start to push the row 2 liquid. The row 2 liquid will start to rise in this inclined plane. This is nothing but the H2. Okay. पर हमको इधर perpendicular height चाहिए, not the inclined one. So in order to find out that, we need to take this angle. We need to find the angle of this inclined plane. That is, B is nothing but the base, P is the perpendicular, and H is nothing but the hypotenuse. So in order to find the angle theta, a formula is A, that is perpendicular divided by the hypotenuse. So perpendicular is equals to hypotenuse into sine theta. Hypotenuse is nothing but the H2. It means that how much liquid got risen in the inclined plane. Okay, that we will take it as an H2. तो फॉर्मूला क्या बनेगा, P is equals to H2 into sin theta. Okay, तो PA is equals to point pressure A is equals to माइनस इंटू ρ1 g इंटू H1। माइनस इसलिए कि लिक्विड नीचे की तरफ फ्लो हो रहा है, माइनस ρ1 g इंटू H1। H1 is nothing but the this height H1 प्लस ρ2 g इंटू H2 प्लस इसलिए क्योंकि ये जो लिक्विड है जो राइज हो रहा है इधर। ओके, राइज हो रहा है इसलिए प्लस सिंबल है, ρ2 लिक्विड है, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड H2, दिस हाइट इज नथिंग बट द H2। तो इक्वेशन क्या बनेगा, प्रेशर A इज इक्वल्स टू -ρ1 g इंटू H1 प्लस ρ2 g इंटू H2 साइन थीटा। ओके, और हम इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, दैट इज PA इज इक्वल्स टू ρ2 g इंटू H2 साइन थीटा माइनस ρ1 g इंटू H2। दिस इज द इंक्लाइंड सिंगल कॉलम मैनोमीटर। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डिफरेंशियल मैनोमीटर। Differential manometer is nothing but the manometer which is used to measure the pressure difference between any two gases or liquids. मतलब सिंपल मानोमीटर में हमने क्या पढ़ा था, एक रिजर्वेयर होता है, एक ही प्रेशर अप्लाई होता है। पर डिफरेंशियल मानोमीटर में क्या होगा, तीन लिक्विड्स होंगे, तो इन तीनों लिक्विड्स होंगे और दो साइड से प्रेशर अप्लाई होगा। ओके, इन डिफरेंशियल मानोमीटर। एंड इसमें टू टाइप्स है, दैट इज वन इज द यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर एंड द inverted U-tube differential manometer. First, let us know what is meant by the U-tube differential manometer. As you can see here, this is the U-tube shaped glass tube. One end is connected to the one compartment and other end connected to the another compartment. Okay, this compartment row 1 we will take, and this is a row 2 liquid, and this is the row 3. It means it has different densities. Okay, row 1, row 2 and row 3. And here from two sides the pressure is applying. This is the pressure A and this is the pressure B. When we open the knob, what will happen? The liquid which is in the row 1 compartment will start to flow downwards, and it will start to push the another density liquid, and the another density liquid will start to
rise. As I said earlier, the liquid which flows downward, we will take it as a minus sign, and with the liquid will start to rise, it will take it as a positive sign. Okay. देन इक्वेशन क्या बनेगा, माइनस रो 1 जी इंटू H1, क्योंकि लिक्विड नीचे की तरफ जा रहा है, एंड माइनस रो 2 जी इंटू H2, बिकॉज नीचे आ रहा है फिर से भी, हायर डेंसिटी लिक्विड भी नीचे जा रहा है, माइनस रो 2 जी इंटू H2 प्लस रो 2 जी इंटू H3, बिकॉज इन H3 to H4 द लिक्विड इज राइजिंग. ओके, सो इट विल बी पॉजिटिव. एंड नेक्स्ट plus rho 2 g into H4, because from H4 it is again rising. That is why we took it as a positive sign here. Next is a plus रो 3 g into H5, क्योंकि इधर भी राइज हो रहा है लिक्विड, प्लस PB. PB is nothing but the this point, pressure B. Here also the pressure is applying to this compartment. So that is why pressure B. So what will happen? PA minus PB. This PB will go to here, beside the equals, it will be minus. So PA minus PB is equals to minus rho into G1 into H1 plus रो 2 G into H4 plus रो 3 G into H5. These points are negligible because it has the same levels, as you can see in the diagram. So it is negligible. So the final formula is this. This is the U-tube differential manometer. Next is the inverted U-tube differential manometer. ये भी सेम है कंस्ट्रक्शन, जो बस इतना फर्क है कि ये इन्वर्टेड शेप में है यूट्यूब. ओके, सो दिस इज द रो 1 liquid, and here is the रो 2 liquid, and here is the रो 3 liquid. This is the pressure A, this is the pressure B. After opening the knob, what will happen? The liquid will flows and the liquid will start to rise because it is in the inverted shape. Earlier, what happened? It was not in the inverted shape, so the liquid was going downwards. But here, the liquid is going upwards because it is in inverted shape. The pressure is applying here and it is start to rise. Okay, so because of that, plus रो 1 G into H1 minus रो 2 G into H2, because again it start to decline here. Because of that, it is minus sign, and again minus रो 3 G into H3, because it's again started to come downwards, as you can see here, plus PB. PB is nothing but the pressure B, which is applying here in this compartment. Okay. So this pressure B will come across the equals to this side, left side. So then what will happen? PA minus PB is equals to रो 1 G into H1 minus रो 2 G into H2 minus रो 3 G into H3. So this is the formula that we got for the inverted tube differential manometer. Okay. So this is about the today's class, and in next class we will discuss about the Reynolds number, Bernoulli's theorem, and what are those significance and what are their applications and all. Okay.